everyone, welcome to another part of Arishtam's tutorial series. Today we are going to talk about Kombucha. So how are we going to make a kombucha, and we are going to make a simple batch of kombucha using SCOBY and mother. Okay? Just for your information, in the link below you'll find links to Arishtam page where you can buy the kombucha SCOBY. The SCOBY will come with about 200 ml of mother with it. With that you can make about 1 liter of kombucha. Here is the SCOBY that we got, and we have put it into a jar, and we'll make some kombucha out of it. Okay? Okay. So you have any questions? Yes. What is this kombucha first of all? Okay. So kombucha is a probiotic cider-based drink. Essentially, the drinks that you get in the market are full of sugars inside that. There's so much full of sugars inside that they will lead to a rapid increase of weight for you. And they're not healthy for you. If you look at Pepsi, Coke, or any packaged fruit juices, they are full of sugar. You can look at the constituents inside. While here in kombucha, we will start with a very low quantity of sugar, and that sugar also will ferment it out. Okay, so this is the number one reason. The number two reason is kombucha is going to be a little bit sour. So because of the fermentation, it will produce a natural acetic acid vinegar, which will emit the cider-like flavors. Now this sour thing is very good for your digestion because it helps your stomach digest food, digest fats, and it improves your digestion. The third and the most important thing, and that is the reason why what we sell is called kombucha SCOBY. SCOBY is symbiotic colony of bacteria and yeast. It is a wide fermentation which has a lot of varieties of different strains inside in it. So these different strains of microbes, what they do is they help restore your gut balance. Okay, so you remember when you were sick, they used to give you antibiotics, and after that your digestion would become bad. You will not feel like hungry. Yes, after that medicine, I do not feel like doing anything. I just feel like going to sleep. Yes, the reason is about 40% of human body's digestion happens not in your liver, stomach, intestines. It happens in your gut because of the gut microbes, the small microbes that are attached in the inner linings of your digestive tract. Now, the antibiotic that you take, it cleanses everything because it does not know what is a good bacteria, what is a good microbe and a bad microbe. So it kills everything. That's what the broad spectrum medicines do. And when they kill everything, your digestion goes down and you don't feel hungry, you're not able to digest flatulence, which is all signs that your digestion is not proper. Kombucha is one of the methods in which you can restore your gut fauna and you can introduce good bacteria in your stomach. Any more questions? How is this kombucha made? Very good. So that's what we are going to do today. So we got about 200 ml of kombucha mother along with the SCOBY. You can see the SCOBY as a white floating jelly. See, I'll show it to you. Oh, and wash your hands after that. Yes, I did wash my hands. See, this is a white floating jelly. We are going to take about 1 liter of water. Okay, and you can use your water bottles as a very good indicator of 1 liter bottle. If you don't have a water bottle, then you can use a weighing scale. 1 liter of water weighs 1 kg exactly. So you need 1 kg of water. Okay, we are going to use 60 grams of sugar, and we are going to use about 3 to 4 grams of green tea. Okay, so do we only have to use green tea? Can't we use black tea? Yes, you can use black tea, you can use ginger, everything. But in the first fermentation that we are going to do, we recommend green tea because the SCOBY becomes completely white, your colony health is good. But if you use black tea, the flavors are a little bit better and the color is a lot darker. So some people like green tea kombucha, some people like black tea kombucha, some people mix the two. You can choose whatever suits you. And freshly made SCOBY would be more sweet, would it? Yes, so fresh kombucha will have about 6% sugar inside that. That is 1/4 of the sugar that will be there in your packaged soda bottles, but still it is a lot. But when we ferment it out, we'll bring it to at 2% or below 2%. Can we use honey or jaggery instead? Yes, you can use any source of sugar here. One of the most common sources of sugar is honey. And the kombucha that is made using honey is called Jun, J-U-N, Jun. That's a Yeah. funny name.
Yes, so Jun kombucha has a very good honey caramel notes to it, and which makes it very very interesting. And people prefer it to be on a slightly sweet side rather than on the sour side. The basic kombucha, they prefer it very dry, which is they're fermented out completely and it is pretty sour. So that is it. Jun, they prefer slightly sweet. If you want to use jaggery, my recommend yes, you can use jaggery. The taste will change a little bit different because jaggery has a very unique earthly flavors. मिट्टी का जो स्वाद होता है ना, वो थोड़ा सा आता है jaggery में. But some people like it, and jaggery is pretty much common, so you can use jaggery as well. Apart from that, there is brown sugar which is there, unrefined sugar which is there, so you can use any of one of the two. For the demonstration purposes, we have used the white sugar, which is very very easily available and almost available in almost all homes. So we have used that, but feel free to replicate it. If you're using jaggery, then we'll recommend you to use about 65 grams. The reason is jaggery has a little bit higher moisture content, so to compensate for the moisture content, we use about 10% extra. But so it's just 60 grams, use 65 grams of jaggery, but apart from that, nothing else changes. Okay, so can we use palm sugar, because palm sugar is not that sweet? Yes, you can use any sugar. So jaggery, palm sugar, or brown sugar, or those healthy sugars also you can use. Yeah. If you want to use fruit sugars, so glucose, grape juices, cranberry juices, we will be talking about that in the second part of the video, wherein after the first fermentation is done, we'll introduce them. But here, we can use any sugar which can be boiled. Okay, now over to the steps. We've already taken 1 liter of water here. Okay, this is a regular tap water. I did not use the RO water, but you can use RO water as well. Okay, the only difference is, since we are going to boil it, anyways all the microbes will die, but tap water in my house, it is hard water, so it is very good in calcium, it is good in magnesium. So calcium we need for our bone density anyways, so I prefer to use regular tap water as much as possible, but you can use the RO water, distilled water as well. Okay, now see, one thing you have to remember is sugar on its own does not go bad, but sugar attracts a lot of microbes in it, because everybody wants to eat sugar and they are just waiting for it to get dissolved in water. When it gets hydrated, they are able to ferment it out. So that's the reason why चाशनी जो हम लोग बोलते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है अगर पतली चाशनी में नहीं है. So that is the reason why we add sugar very early here, and we'll boil the whole thing out. Okay, so the tea leaves we are not going to add in the first step. When the boiling is complete and while we're cooling it down, so at about 90 degrees Celsius, we are going to add the tea leaves, and we'll allow it to bring it down to all the way 30 degrees Celsius. Okay, while the water is being boiled and the sugar is being dissolved, let's talk about ginger kombucha. Okay, so in about 2 liters of kombucha, I'm going to use a whole ginger root. This big ginger root. Okay, you can see it's just the size of my thumb. So one thumb is good for about 2 liters. But again, ginger is depends upon your personal preferences. Indians like a little bit strong flavor, so they'll use a lot more ginger than others are using. If you are using spices, in the spices I will recommend you star anise, जो हम लोग बिरयानी में use करते हैं. I can recommend you. Can we use long and black pepper? Yes, you can use long black pepper. Long is called cloves. Black pepper is called black pepper. काली मिर्ची जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं. Then you can use fennel, soft also, but experiment to 2-3 combinations because it's a little bit difficult to pair with. Another thing that I like is black cardamom. So not the green cardamom that is usually used, but the black cardamom that is used in making pav bhaji or your rajma. Okay, it's a black cardamom that is also very good. This is fennel, but be careful with fennel because it has a very strong, powerful flavors. So there's chances that your kombucha flavors might get drifted away. Okay. This is cinnamon powder, but we do not use powder. If you want to use cinnamon or bay leaf, then you use the whole spices. हम लोग whole spices क्यों use करते हैं? Powder क्यों use करते हैं? Powder. जलजीरा देखा है आपने? जलजीरा में जो पुदीना और जीरे का पाउडर हमेशा ऊपर फ्लोट कर रहा होता है. वो आपको अच्छा लगता है, ये जलजीरा में चल जाता है. लेकिन जब आप उसको बॉटल में करेंगे, पैकेज करेंगे और उसमें अगर कोई चीज फ्लोट कर रही होगी तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है.
और वो पाउडर को निकालना भी बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो चिपक के वो आ जाता है पाउडर। तो इसलिए अगर हम लोग पाउडर की जगह होल स्पाइसेस यूज करेंगे तो बेटर रहता है। एनीवेज जब हमारा फर्मेंटेशन होता है, ये जो विनेगर एसिटिक एसिड जो बनता है, दैट इज अ सॉल्वेंट एंड इट विल एक्सट्रैक्ट आउट व्हाटएवर फ्लेवर्स इट वांट्स टू टेक आउट, और फिर बाद में आप अपने स्पाइस की स्टिक आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। जिंजर को यूज करने में आप जिंजर को धोइएगा, इसका छिलका मत उतारिएगा, छिलके के साथ इसको धोइएगा और इसको कद्दूकस करिएगा, थोड़ा सा बारीक कद्दूकस कर दीजिएगा और उसको सेकेंडरी फर्मेंटेशन। तो अभी में नहीं, 3 दिन के बाद हम लोग स्कूबी निकाल के एक से दूसरी बोतल में रखते हैं जिसमें कार्बोनेशन होता है। तो उसके अंदर आप फ्रूट जूसेस, स्पाइसेस, जिंजर, आपको जो डालना है वो आप डाल सकते हैं, और अंदर 2-3 डेज आप वेट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा और शुगर डालना होगा तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। Okay, now I have a question about SCOBYs. Yes. The big SCOBYs would be the mother SCOBYs and the small would be the baby SCOBYs, yeah? तो इसमें क्या होता है कि एवरी टाइम यू मेक अ बैच, तो एक आपने यहाँ पे देखा एक नई लेयर स्कूबी की बनती जाती है। आपको यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारी लेयर्स आ रही हैं, ठीक है। एक पुरानी लेयर के ऊपर एक नई लेयर बनती जाती है। So whether it's mother SCOBY और daughter SCOBY कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके एक बार अपनी कॉलोनी बन गई है तो इट विल लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। Is SCOBY eatable like jelly? Yes, क्योंकि अभी हमने इसमें शुगर, वाटर और ग्रीन टी डाली है, इसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं डाली है, एंड स्कूबी उसी को फीड करके बनती है, सो इट इज एडिबल। बट कोई ज्यादा ईट नहीं करता है क्योंकि इट टेस्ट लाइक रबर, एक साथ कुछ ज्यादा स्वाद नहीं होता है। Yum. रबर जैसा टेस्ट होता है, उसमें फ्लेवर्स नहीं होंगे, बट इफ यू लाइक इट विल बी ग्रेट। You remember we got some tasteless mango. You guys did not like the taste, but I was not also looking about the taste. I just liked it. It was like a gel in my mouth. तो अगर आपको मैंगो डालना है तो मैंगो में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक आमरस बनाना पड़ता है। तो आमरस में क्या होता है कि मैंगो लेंगे, मैंगो का जो पल्प होता है उसको हम लोग तोड़ते हैं और उसका आमरस बना दिया। अब आमरस को हम एक कपड़े में बंद करके उसको डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि आमरस में थोड़े बहुत झूठे जो फाइबर्स होते हैं ना वो होते हैं, तो हमें फाइबर्स अपने कम्बुचे में नहीं चाहिए, तो हम उसको एक रुमाल के अंदर डाल के उसको बंद कर देंगे आमरस को। और 3 दिन के बाद जब हम लोग स्कूबी को हटा के जो बाकी कम्बुचे को हम इस बॉटल में दूसरी बॉटल में डालेंगे, तो उस बॉटल में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हम उसके साथ साथ आमरस के साथ जिंजर बहुत अच्छा पेयर करता है बाय द वे, तो आमरस एंड जिंजर आप डाल सकते हैं, या आपको कोई भी फ्रूट मिलता है तो आप वो फ्रूट डाल सकते हैं। जामुन का आप कोशिश करिएगा, जामुन का बहुत लोगों को पसंद होता है, बेरीज का लोगों को काफी पसंद होता है, सो यू कैन एक्सपेरिमेंट देनी ऑन दिस। हमारा वाटर ऑलमोस्ट बॉइल होने को आ गया है, इसमें शुगर पूरी डिसॉल्व हो गई है। अगर शुगर डिसॉल्व नहीं होती है, कुछ खासकर जैगरी वैगरी में कुछ सेडिमेंट आता है, तो आप एक अपने चाय की छलनी उसमें से आप निकाल दीजिएगा, तो सैंड या कोई कंकड़ वंकड़ जो भी चीजें अनडिसॉल्व पार्टिकल्स होंगे वो सब निकल जाते हैं। बट अगर आपने अच्छी शुगर खरीदी है तो फुली डिसॉल्व होगी, जैसे हमारी शुगर पूरी डिसॉल्व हो गई। Okay, so again one more thing, चाय की छन्नी से वो पार्टिकल्स निकल जाएंगे, तो हम ऐसी एक रुमाल से कर सकते हैं? हाँ जी, आप रुमाल से भी कर सकते हैं फिल्टर। इनफैक्ट रुमाल से फिल्टर करना बेटर रहता है, क्योंकि क्या होता है कि चाय वाय में थोड़ी बहुत डस्ट होती है, और आपने देखा होगा जब हम चाय पीते हैं तो नीचे थोड़ी सी डस्ट जमा हो जाती है, तो लेकिन क्योंकि जो छलनी होती है उसके पोर्स इतने फाइन नहीं होते हैं, रुमाल के पोर्स ज्यादा फाइन होते हैं, इट इज इजी। और बाद में आप रुमाल का एक बैग बना के उसको हाथ से निचोड़ के आप पूरा कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर आप एक बॉटल में डालते हैं, क्या हम हैंकी डालने के बाद स्क्रू क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। ये कंबुचा को ओपन फर्मेंटेशन चाहिए होता है। ओपन फर्मेंटेशन मतलब इट नीड्स कंटिन्यूअस एक्सेस टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से फायदा क्या होता है? It can breathe? Yes. So this is a living culture, it can breathe. And when it breathes, it will convert any alcohol that was produced in the fermentation into cider. और बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए वैसे भी बहुत सारा उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। Yeast can survive without there, but what we are making is SCOBY, right? So SCOBY is symbiotic colony of yeast, of bacteria and yeast. तो बैक्टीरिया को एयर चाहिए होती है, तो अगर हमने इसको कपड़े से किया है, और आप देख रहे हैं बार-बार मैं इसको खोल भी रहा हूँ और इसको लूज हमने पैक किया है। कपड़ा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर कपड़ा पैक नहीं किया है तो कीड़े, मच्छर और अलग-अलग पैथोजेंस इसके अंदर आ सकते हैं, तो इसलिए हम कपड़े से इसको ढक देते हैं जिससे इंसेक्ट्स वगैरह ना आ जाए, कोई डस्ट ना गिरे इसके अंदर। And when we fully tighten it, it would be like a
हम लोग मास्क में जब रहते हैं बुरी तरीके से हम सफोकेट हो जाता है, वैसे ये भी सफोकेट होकर मर जाता है। मरेगा तो नहीं, लेकिन हाँ स्कूबी की हेल्थ खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स होते हैं वो बिना एयर के सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है एंड उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। एंड पहली चीज है। दूसरी चीज है कि जो भी कंबूचा बिना ऑक्सीजन के बनता है उसमें थोड़ा सा अल्कोहल आ जाता है, इसलिए हम लोग ओपन इसको फर्मेंट करते हैं जिससे वो अल्कोहल ना आता है। अभी हमारा कंबूचा बॉयल हो चुका है, हम इसको वेट करेंगे जब ये 95 डिग्रीज तक आ जाता है, जो बॉइलिंग जब खत्म हो जाती है तब हम उसके बाद, अगर आप थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, 95 डिग्रीज जब आ जाएगा तो तब आप चाय की पत्ती डालते हैं। वी डोंट पुट दी चाय की पत्ती व्हेन इट इज बॉइलिंग, द रीजन इज फिर जब बॉईल करते हैं तो चाय का फ्लेवर्स भी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उसके अरोमास लॉस्ट हो जाते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम होती है कि कार्सिनोजेनिक मटेरियल ज्यादा एक्सट्रैक्ट आउट होता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर हम डालते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई अगर आप कोई भी चाय की भी रेसिपी देखेंगे तो उसमें हमेशा शेफ बोलता है कि नेवर बॉईल द टी, स्टीप द टी। स्टीप का मतलब ये होता है आपने गर्म पानी में इसको रखा है और आपने अलाउ किया है इसको ठंडा करने के लिए। अभी क्योंकि ये हमने जब बॉईल किया था तो ये पूरा सैनिटाइज हो गया था, तो अभी हम इसको एक प्लेट से इसको ढक देंगे। नाउ ये 1 लीटर का बैच था, तो इट विल टेक अबाउट 2 आवर्स फॉर इट टू कम टू द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर करने का बेस्ट तरीका है 30, हमारा बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारे हाथ से कोई चीज ज्यादा ठंडी या हमारे हाथ के टेम्परेचर की हो रही है तो यानी वो ठंडा इनफ हो चुका है कि हम उसको यूज कर चुके हैं। अगर हमें हल्का सा भी गर्म लग रहा है, गुनगुना लग रहा है, we are feeling it's hot, then it is probably too high temperature, 40 डिग्री से ऊपर होगा। इसके अंदर अगर आपने कम्बूचा डाल दिया तो फिर आपकी स्कूबी जो माइक्रोबियल कल्चर जो आप कल्टीवेट करना चाहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको किसी भी तरह से इसको एयरटाइट करना है, बट ऐसे एयरटाइट नहीं करना है, इसको ऐसे करना है कि इसमें इंसेक्ट्स वगैरह ना आए और साथ के साथ इसमें थोड़ा सा बाहर से ऑक्सीजन भी आता है। ओके, अभी हम लोग 2 घंटे बाद आपको फिर से बताएंगे जब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी होगी। we'll pour the tea। 2 घंटे पहले हमने 1 लीटर चाय बनाई थी, उसके बाद हमने उसको उस टाइम में तो बहुत गर्म था, अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये मेरे बॉडी टेम्परेचर से कम आ गया है, मेरे बॉडी टेम्परेचर से कम आ गया है। हमारा स्किन टेम्परेचर 38 डिग्री से होता है, तो यानी दिस इज गुड इनफ कि इसको अगर मैं कंबूचा में डालूंगा इट विल नॉट किल एनी ईस्ट इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो अभी ये हो चुका है। जैसे हम लोग चाय के लिए भी करते हैं, चाय के बर्तन, जैसे हम लोग दही के लिए करते हैं, दही का बर्तन छू के आपको पता चल जाता है। दही का बर्तन हम लोग गुनगुना देते हैं दूध, जिससे दही अच्छा जमता है। इसमें हम लोगों को ठंडा चाहिए, विच मीन्स हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। आप एक छानने के लिए मैं जो करता हूं वो ये है कि मैं कपड़े की छलनी बना देता हूं। इससे फायदा क्या होता है कि कपड़े के पोर्स से ज्यादा छोटे होते हैं, तो ये जो चाय का जो टी डस्ट है नीचे वो सेटल नहीं होती है। आपने कभी एक कप में अगर चाय पी होगी तो देखा होगा कि नीचे थोड़ी बहुत टी डस्ट सेटल हो जाती है, तो दैट इज बिकॉज वो जो स्टेनलेस स्टील की या नायलॉन की जो मेश होती है उसमें काफी सारे उसके होल्स काफी बड़े होते हैं। कपड़े के उसके कंपैरिजन में काफी महीन होल्स होते हैं। अब हम इसको ढक के हफ्ते भर रखेंगे। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो रिकमेंड कि आप 1 वीक वेट करेंगे, और उसके सब्सिक्वेंटली एक बार जब कॉलोनी स्टैब्लिश हो जाती है तो कंबूचा काफी फास्ट बनता है। याद रखिएगा, इसको एयर टाइट बंद नहीं करना है जैसे हम लोग बियर या वाइन को करते हैं, इसको थोड़ा सा लूज रखना है। एक कपड़े से अगर आप ढक के रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, बट अगेन आपकी चॉइस है। 3 दिन के बाद हम लोग एक और इसका पार्ट बनाएंगे, जिसके अंदर जब ये फर्मेंट हो जाएगा तो हम इसको जिंजर के साथ इसको फर्मेंट करके हम फ्लेवर्ड कंबूचा, जिंजर कंबूचा के साथ हम स्टार्ट करेंगे। एंड वी आल्सो टॉक यू अबाउट कि फ्रूट कंबूचा एंड जिंजर कंबूचा कैसे बनाते हैं। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीक, बाय बाय।